Hello dear students, I am Professor Atul Atsale, founder principal Atul Accountancy Classes Nasik. For FY BCom we have started piecemeal distribution of cash, under which we are learning first method, that is surplus capital method. Under this method we have to prepare, or we are expected to prepare two statements. The first one is statement of surplus capital and the second one is statement of distribution of cash. Today we are going to see how we should prepare first statement, that is statement of surplus capital. We have our notes in your hand. In that, second problem is there where partners are given Mr. P, Mr. Q and Mr. R with the capital of 24,000, 15,000 and 9,000, and their ratio is 3:2. So for this problem we are going to prepare first statement, that is statement of surplus capital. Okay dear students, now we are going to prepare this statement of surplus capital. चलो, खूप बहुत इझी आहे, खूप सोपं आहे. आपण शांततेत स्टेप बाय स्टेप बघूया की स्टेटमेंट कसं बनता येते. ओके, नाउ लुक एट हियर. स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कॅपिटल, 3 columns for the 3 partners P, Q and R. Capitals 24,000, 15,000 and 9,000. This is given in the problem. जे दिले प्रॉब्लेम मध्ये ते आपण रेडीमेड लिहून घेणार. 3:2. It is the ratio given in the problem. Okay. Now see, this is our step number A. This is our step number A. Divided by ratio. Given capital will be divided by the ratio. So 24,000 divided by 3. 15,000 divided by 3 and 9,000 divided by 2. So now after division, whatever amount we will get, that is known as capital per unit. Now next step is to find out the smallest amount out of these 3. इन तीनों में से जो छोटी अमाउंट होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसे लॉक कर देंगे. जो छोटी अमाउंट थी 4,500 फॉर मिस्टर आर, तो हमने वो लॉक कर दी है. नाउ तो आर का कैपिटल हम एज अ बेस यूज करेंगे. हमेशा याद रखना, जो बेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता. बेस विल रिमेन कांस्टेंट एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय रेशियो. नाउ दिस इज कांस्टेंट बेस 4,500 multiplied by 2, 9,000, 4,500 multiplied by 3, 13,500, again constant base 4,500 multiplied by 3, 13,500. This is our step number B. This is our step number B. Now step number A minus step number B is equal to step number C. Step number A minus step number B is equal to step number C. Step number A थी हमारी 24,000 minus step number B 13,500, that is 10,500. 15,000 minus 13,500, that is 1,500, and 9,000 minus 9,000, it is nil. याद रखना है, जिसका कैपिटल हम बेस यूज करेंगे, जिसका कैपिटल हम एज अ बेस यूज करेंगे वो हमेशा नील हो जाता है.
thereafter same steps, ratio again, दो ही पार्टनर का कैपिटल बाकी है तो दोनों का ही रेशियो लेंगे. सेम स्टेप विल बी रिपीटेड. Divided by ratio, that will be known as the capital per unit. So 10,500 divided by 3, 1,500 divided by 3, that is 500. जो काम हमने यहाँ किया था, स्मॉलेस्ट अमाउंट सेम, स्मॉलेस्ट अमाउंट विल बी ₹500, that will be locked. स्मॉलेस्ट अमाउंट इज 500, वो हम लॉक कर देंगे. Q, सेम स्टेप, Q's कैपिटल एज अ बेस मल्टीप्लाइड बाय रेशियो. हमें याद रखना है बेस चेंज नहीं करेंगे, बेस अब कांस्टेंट रहेगा. तो बेस हमारा 500 है, 500 into 3, अगेन कांस्टेंट बेस मल्टीप्लाइड बाय 3. This is our step number D. Last step number C is equal to step number D is equal to step number E. Step number C minus step number D is equal to step number E. 10,500 minus 1,500. 1,500 minus 1,500. That is nil. This is known as जो हमारा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल. दिस इज द सरप्लस कैपिटल. and this is second surplus. So same steps will be repeated again. So जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता है सरप्लस, ऊपर वाले स्टेप्स नीचे रिपीट हो जाएंगे. सो इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो नाउ अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ.